had no plans to open, but again I mentioned if this falls you have a lot of support and you see candles coming and retesting 730 levels and then roaming around that levels for a longer period of time. I did take this trade around this 730 levels. Actual target was day low, but I got a little frustrated and came out once 10-15 low broke. Stop loss was day high. It even came to around 547 levels. Yeah, stop loss was 5556. Took positional trades because this broke. Let's see. Stop loss all time high. Did not take any trades in Nifty and BankNifty. 3 minutes. So 3 minutes had some volume, selling volumes, but that was broken. Now day high was not broken. That is the reason I took this trade. If you've watched my buy trades, so when the high and the low of the buying zone is broken and day low is not broken, I look for buying opportunities. Similarly, when in low, the high of the candle which created this low breaks, but day high is not broken, I look for selling opportunities. Same use case, and this also really helped considering the lines here. Coming to system trade also gave a sell below 1230, but 1230 was supposed to be below. We were closing below, so target was day low. Hence, even though I had some kind of a confidence once I took that trade based on 3 minutes and 1 hour, that I could get some kind of a edge from the system trade as well, because 1230 low was broken. So what will I do on Monday? I am positionally short, as I mentioned, so hoping for first target to be 400 break. Let's see. Stop loss is high. थैंक यू. निफ्टी में मैंने बोला था कि अगर ये गिरता है तो बहुत सारे सपोर्ट हैं अभी यहाँ पर नीचे, और अब वो रेजिस्टेंस बन गए हैं. तो अगर आप देखें तो पहला कैंडल का गैप डाउन हुआ है, उसमें भी रेंज था 100 पॉइंट्स का, तो भी ये 3 कैंडल ऑलमोस्ट 730 के आसपास ही घूम रहा था. मैंने यहाँ पर एक 730 के आसपास एक ट्रेड लिया 2 रीज़न की वजह से. एक तो ये था कि ये यहाँ पर है और स्टॉप लॉस हाई है. मेन रीज़न तो बेसिकली ये है. अगर आप देखें तो मेरा बाइंग, अगर आपने पोस्ट मार्केट देखा तो मैंने उसमें बाइंग स्ट्रैटेजी बताई है, जहाँ पर अगर बाय वॉल्यूम्स बनते हैं और उस डे लो नहीं टूटता, पर जिस कैंडल ने बाय वॉल्यूम बनाया है उसका लो टूटता है, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखता हूँ. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो डे हाई नहीं टूटा है, पर इस कैंडल का हाई टूट गया है जिसने ये सेल वॉल्यूम बनाया है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ मैं. मैंने क्यों उस लेवल पे देखा 730 के पे, क्योंकि मेरे को एक और एज चाहिए था, सिर्फ ये नहीं. तो अगर आप यहाँ देखें तो वो एज ये है 730 लेवल्स. और सिस्टम ट्रेड भी जो मेरा आया था वो बेसिकली उसमें मैंने वीडियो में बताया था 1230 के नीचे सेल करने के लिए. उसमें वो ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि 1230 का कैंडल नीचे होना चाहिए था आपके. तो 1230 के नीचे अगर आप देखें तो उसने कभी एक बार जब वो लो तोड़ा उसने हाई नहीं तोड़ा उसका, जो कि स्टॉप लॉस था मेरे सिस्टम ट्रेड के लिए. तो ये सब 2-3 चीज़ें यूज़ करके मैंने ये ट्रेड लिया है. अब मैं मंडे क्या करूँगा? क्लोजिंग अच्छी है, मैं पोजिशनली शॉर्ट हूँ क्योंकि 60 टूट गया, पर देखते हैं. और स्टॉप लॉस ये हाई है 18890, देखते हैं.